हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे हो। मैं भी अच्छा हूँ। मैं हूँ रॉयल और आप देख रहे हैं रॉयल विद ट्वेल्व एजुकेशन। तो हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसके बारे में हम लोग फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं वीडियो के एंड में। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स will never fall to fascinate us, even though the angiosperms show such a large diversity in external structure or morphology. They are all characterized by presence of roots, stems, leaves, flowers, and plants. In chapter 2 and 3, we talked about classification. चैप्टर 2 एंड 3 में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन के बारे में, प्लांट और मॉर्फोलॉजी के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है. एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट्स और फॉर दैट मैटर एनी living organism. We need to know, understand technical terms and understand definition. We also need to know about the possible variation in different parts found as adaptation of the plants of their environment. Example: adaptation to various habits for protection, climbing, storage, etc. If you pull out any weight, you will see that all of them have roots, stems, and leaves. They may be bearing flowers and fruits. The underground part of the flowering plants is the root system, while the portion above the underground (5.1) the root. In majority of the dicotyledonous plants, the direct elongation of the radicle leads to the formation of primary root, which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the parts of flowering plants. प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये दोनों को कहते हैं रूट सिस्टम. और ये जो है डायग्राम देख सकते हैं, ऊपर से यहाँ तक, इसे भी बोलते हैं रूट सिस्टम. ये जो मिडिल पार्ट है इसे कहते हैं बड्स. ये जो है इसे कहते हैं नोट, इंटरनोट. इसे कहते हैं लीफ. इसे कहते हैं स्टेम. इसे कहते हैं फ्रूट. और इसे तो सभी को पता है, इसे क्या कहते हैं,
फ्लावर्स। ये हो गया हमारा पार्ट्स ऑफ ए फ्लोवरिंग प्लांट्स। टैप रूट सिस्टम as seen in the master plant. Figure 5.2a. In monocotyledonous plants, the primary root is short-lived and is replaced by a large number of roots. Replace होता है large number of roots में replace होता है. These roots originate from the base of the system. ये base system में है and constitute the fibrous root system. As seen in the wheat plant. Figure 5.2b. In some plants like grass, monstera, and the banana tree, roots arise. इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, इम्पोर्टेंट है. इन सम from parts of the plants other than the radicle and are called adventitious roots. ये एक मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसे हम फुल अंडरलाइन कर देते हैं. तो हो गया. तो आपका ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ एडवेंटेजियस रूट्स. तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मोनेस्ट्रा एंड बनियम ट्री रूट्स एंड अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स अदर देन द रेडिकल एंड आर कॉल्ड एडवेंटेजियस रूट्स. और ए भी आ सकता है, राइट विथ देयर फंक्शन. फंक्शन भी आ सकता है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम. द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एंकर टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. यहाँ तक भी अंडरलाइन कर देते हैं. फिगर 5.2 में देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप, फिब्रस, एडवेंटेजियस. ये जो है लेटरल्स, इसे कहते हैं लेटरल्स. ये जो बाल के जैसा है इसे कहते हैं लेटरल्स. और जो ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मेन रूट.
इसका जो नाम है टैप, और बी नंबर का जो नाम है फिब्रस, इसे कहते हैं फिब्रस रूट। सी नंबर जो है, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, सी नंबर का डायग्राम, एडवेंटेजियस रूट, इसे कहते हैं एडवेंटेजियस। फाइव पॉइंट 1.1 regions of the root. The root is covered at the apex by a thimble-like structure called the root cap. Figure 5.3. It protects the tender apex of the roots as it makes its way through the soil. A few millimeters above the root cap is the region of meristematic activity. The cells of the region are very small, thin-walled, and with dense protoplasm. They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement, and are responsible for the growth of the root in length. This region is called the region of evolution. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. ये आपका यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है. What is the difference between of region? What are the difference of a region? What are the region of attraction? Attraction and maturation. तो आप लोग कहाँ से लिख सकते हैं? The cell यहाँ से लिख सकते हैं. The cell proximal to the region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. This region is called region of elongation. The cell of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to region of elongation is called the region of maturation. यहाँ से लिख सकते हैं. From this region, some of the epidermal cells from very fine and delicate thread-like structures called root hairs. यहाँ से भी आप लोगों का एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज सच ए रूट हेयर? फ्रॉम दिस रीजन, यहाँ से फ्रॉम दिस रीजन some of the epidermal cell from very fine and delicate thread-like structures called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. यहाँ से यहाँ तक.
तो आप लोग देख सकते हैं 5.3 डायग्राम में द रीजन ऑफ द रूट टिप, इसे कहते हैं रूट कैप, और ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं रूट हेयर। रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसे कहते हैं रीजन ऑफ इलोगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द रीजन ऑफ द रूट टिप। 5.1.2 Modifications of root. Root in some plants change their shape and structures. Root some plants में change होता है. Their in some plants root can change their shape and structure and be modified to perform function on the absorption and condition of water minerals. They are modified for support storage for food and respiration. मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले हम पैरा को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज माय मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। इसका एक क्वेश्चन भी है फर्स्ट चैप्टर में, 1 नंबर क्वेश्चन में है। रूट्स इन सम प्लांट्स रूट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals. They are modified for support, storage of food and respiration. Figure 5.4 and 5.5. Tap roots of carrot, turnip, and adventitious roots of sweet carrot get swollen and store food. Can you give some more such example? Yes. Have you ever wondered what those hanging structure that support a banyan tree are? These are prop roots. Similarly, the stems of maize and sugarcane have supporting roots coming out of the lower nodes of the stem. These are called stilt roots. इसे कहते हैं stilt roots. In some plants such as rhizora growing in swampy areas, many roots come out of the ground and grow vertically upwards. Such roots called anapiotrophores helps to get oxygen for respiration. हेल्प करता है ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन करने के लिए। ये जो डायग्राम देख सकते हैं फिगर 4.4 या 5.4 मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर सपोर्ट बेनियम ट्री, इसे कहते हैं बेनियम ट्री।
फिगर 5.5 में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर, ये जो है ये है स्टोरेज, ये जो है स्टोरेज। स्पार्कली ग्रास, इसे कहते हैं स्पार्कली ग्रास, इसे कहते हैं टर्निप मतलब ऑनियन, कैरोट इसे तो आप सभी जानते हैं, गाजर, स्वीट पोटैटोस, मीठा आलू, ये है। और बी जो देख सकते हैं, बी रेस्पिरेशन फेनोमेटोफोरे इन रिजोफोरा, एक कार्टून की तरह डायग्राम दिख रहा है, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन फेनोमेटोफोरा इन रिजोफोरा। हो गया। 5.2 द स्टेम। What are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये लाइन। यहाँ से हो गया। The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flowers and fruits. It develops from the plumely of the embryo of the germinating seeds. The stem bears nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internodes are the proportions between two nodes. The stem bears buds, which may be terminal or axillary. Stem is generally green. जैसे हमें सभी को पता है, स्टेम का जो कलर है वो ग्रीन है। When young and lateral often become woody and dark brown. The main function of the stem is spreading out branches, bearing leaves, flowers and fruits. 1 2 3 4 5 ये 5 नाम आप लोग को याद करना होगा। In conducts water, minerals and photosynthesis. Some stems perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. अगला जो है 5.2.1 modification of stem. The stem may not always be typically like what they are expected to be. They are modified to perform different functions.
फिगर 5.6। अंडरग्राउंड स्टीम ऑफ पोटैटोस, मतलब ज़मीन के अंदर जो वेजिटेबल होता है उसका नाम है पोटैटो। पोटैटो मिट्टी के अंदर होता है। जिंजर, टर्मरिक, एजिनजेकांथ, कोलोसासिया are modified to store food in them. They also act as organs of pollination to tide over conditions unfavorable for growth. Stem tendrils also develop from axillary boots are cylinder and spirally coiled and help plants to climb, such as in gourds, cucumber, pumpkins, watermelon, and grapevines. इसका कहना है कुकुम्बर, पम्पकिन्स, वाटरमेलन्स एंड ग्रापी पाइन्स। ये चारों नाम आप लोगों को याद कर लेना होगा। Axillary boots of stem may also get modified into woody, straight and joint thorns। इसी बार रन कर देते हैं। हाइलाइटर ख़त्म हो गया गाइस, तो हम इस हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। थॉर्न्स आर फाउंड इन मेनी प्लांट्स सच ए सिट्रस, बोएंगेविला। दे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग एनिमल्स। सम प्लांट्स ऑफ एरिड regions modified their stem into flattened optinium or fleshy cylindrical Elaphorrhea structures. They contain chlorophyll and carry फिगर 5.6 में देख सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टीम फॉर स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, स्प्लिट एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये नंबर जो है देख सकते हैं, ये जो पोटैटो है ये इसे क्या अदरक है, इसे बोलते हैं अदरक। ये जो बी जो नंबर है, ये जो कैसे कहते हैं स्टीम मॉडिफिकेशन इनटू टेंड्राइल। सी जो है स्टीम मॉडिफाइड इनटू स्पिन। डी नंबर जो है रूट्स एरिजिंग फ्रॉम नोट्स।
out photosynthesis. Underground stem of some plants, such as grass and strawberry, etc. इस अंडरलाइन कर दिया, इम्पोर्टेंट है. Underground stem of some plants such as grass and strawberry, etc. spread to new niches, and when older plants die, जो पुराना plants जो है वो मर जाता है. New plants are formed in plants like mint and jasmine. Plants पाया जाता है in plants like mint and jasmine. A slender lateral branch arises from the base of the main axis, जो main axis है, and after growing aerially for some time arcs downwards to touch the ground. A lateral branch with short internodes and each node bearing a rosette of leaves and a tuft of nodes is found in aquatic plants like Pistia and Ecocornea. In banana, pineapple, and chrysanthemum, the lateral, इसे अंडरलाइन कर देते हैं. In aquatic plants like Pistia and Ecocornea. Banana, pineapple, chrysanthemum. The lateral branches originate from the basal and underground portion of the main stem, grow horizontally beneath the soil, and then come out obliquely upward. Giving rise to leafy shoots. Five point 3. The leaf. The leaf is a lateral, generally flattened structure, bore on the stem. It develops at the node and bears
a part in its axis. The axillary but lateral develops into a branch. Leaves originate from short apical meristems and are arranged in a arcopetal order. They are the most important vegetative organs or photosynthesis. ये ऐसे अंडरलाइन कर देते हैं एक्सेलरी पार्ट्स। तो आपका एक क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट आर एक्सेलरी पार्ट्स, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं द से फोटोसिंथेसिस तक। द एक्सेलरी पार्ट्स lateral develops into a branch. Leaves originate from short apical meristems and are arranged in a aeropetal order. They are the most important vegetative organs for photosynthesis. A typical leaf consists of three main parts. A typical leaves का जो three main parts है, leaf base, petiole and lamina, ये तीनों नाम three main base, इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। Leaf base, petiole and lamina. Figure 5.7a. The leaf is attached to the stem by the leaf base and may bear into lateral small leaf like structures called stipules. In monocotyledons, the leaf base expands into a head covering the stem partially or wholly. In some leguminous plants, the leaf base may become swollen, which is called the rufinus. The petiole leaf hold the blade to light, long, thin, flexible. Petioles allow leaf blades to flutter in wind, thereby cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. The lamina or the leaf blade is the green expanded parts of the leaf with veins and veinlets. There is usually a middle prominent
bend, which is known as the midrib. Veins provide rigidity of the leaf blade and act as channels of supports for water, minerals, and food materials. The shape, margins, apex, surface, yes अंडरलाइन कर देते हैं. The shape, margins, apex, surface, and extent of infusions of lemma varies in different leaves. 5.3.1 Venation. Venation का आपका क्वेश्चन भी आ सकता है. The arrangement of veins. The arrangement of veins and the valiant in the lamina of leaf is terminated as venation. When the venillans form a network, the venation is termed as reticulate. Figure 5.7b. When the veins run parallel to each other with a lamina, the venation is termed as parallel. Figure 5.7c. Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticulate venation, which parallel venation is the characteristics of most monocotyledons. Structure of a leaf. A. Parts of a leaf. B. Reticulate venation. C. Parallel venation. ये जो आप डायग्राम देख सकते हैं इसे कहते हैं लिप बेस. ये जो पार्ट जो है इसे कहते हैं लिप बेस और नीचे का जो पार्ट है एक्सिलरी पार्ट और ये जो पार्ट है इसे कहते हैं पेटियोल. इसे जो कहते हैं सेटिपुल. इसे कहते हैं लामिना. इसे कहते हैं लामिना. मैंने बोला था ना आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है. 5.3.1 Venation. The arrangement of vines. आप यहाँ से लिख सकते हैं. मेरी अगर सलाह मानो तो आप वेरिएशन का फुल पैरा पढ़ लीजिए. अगर फुल पैरा पढ़ लेंगे तो आपका ये 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ सकता है. तो इजीली आप ये 3 मार्क्स कर सकते हैं. अब अभी तो बच्चे तो नहीं है तो इतना स्मॉल आंसर तो मेमोराइज़ करना पड़ेगा आपको. तो मैक्सिमम मुझे 2 और 3 पेजेस का आंसर मेमोराइज़ करना पड़ेगा. इसीलिए आप मेरी सलाह माने तो ये पैरा फुल मेमोराइज़ करें, रिवाइज करें.
द अरेंजमेंट ऑफ वेन, यहाँ से लिख सकते हैं व्हाट इज वेनेशन, आपका ये क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब अबाउट वेनेशन, एक्सप्लेन वेनेशन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेनेशन, ये सब क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का, तो आप आंसर ये लिख सकते हैं द अरेंजमेंट ऑफ वेनिस एंड द वेलियंस इन द लेमिनिया ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन. When the valence from a network, the valenation is termed as reticle. Figure 5.7b. When the vanish run, when the venium run parallel to each other within a lamina, the venation is termed as parallel. Leaves of dicotyledonous plants generally possess reticular venation, while parallel venation is the characteristics of most monocotyledons. यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं फुल पैरा. 5.3.2 Types of leaves. A leaf is said to be simple. Five point 3.2 Types of leaves. A leaf is said to be simple when its limnia is entered on when incised. The incisions do not touch the midrib. When the incisions of the lamina reach up to the midrib, breaking to it into a number of leaves, the leaf is called compound. A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaves, but not in the axil of leaflets of the compound leaves. आपका एक क्वेश्चन भी आ सकता है टाइप्स ऑफ लीव्स, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से कंपाउंड तक लिख सकते हैं. The compound leaves may be of two types. In a pinnately compound leaf, a number of leaflets are present on a common axis. The rachis, which represents the midrib of the leaf, as in neem. Figure 5.8 Compound leaves. Pinnately compound leaves, pinnately compound leaves, इसे कहते हैं pinnately compound leaves, pinnately compound leaves, ये दोनों का नाम सेम है, ये दोनों को भी pinnately compound leaves कहते हैं. In pinnately compound leaves, the leaflets are attached at a common point, at the tip of petiole, as in silk cotton. 5.3.3
Piloxenate. Pilotaxy is the pattern of arrangement of leaves on the stem or branch. लीव्स स्टेम और जब ब्रांच में ये होता है पिलोनेटेक्सी. दिस इज यूजुअली ऑफ 3 टाइप्स. ये यूजुअली 3 टाइप्स में है. ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड हॉर्लेट. Figure 5.9. In alternate types of pilotaxy, a single leaf arises at each node in alternate manner, as in China rose, mustard and sunflower plants. In alternate manner इसे भी important है. alternate manner ये पाया जाता है चाइना रोज में. चाइना रोज, मस्टर्ड एंड sunflower plants. In opposite type, a pair of leaves arise at each node and lie opposite to each other, as in Calotropis and guava plant. If more than 2 leaves arise at a node and from a whole, it is called whorlate, as in Elastonia. 5.9 में different types of piloxenate. alternate, opposite, whorlate. इसे कहते हैं alternate. बी है इसे कहते हैं opposite और सी से है whorlate. 5.3.4 Modifications of leaves. Leaves are often modified to perform functions other than photosynthesis. लीव्स का जो ऑफ्टन है वो मॉडिफाइड किया जाता है फंक्शन मोर देन फोटोसिंथेसिस. दे आर कन्वर्टेड into tendrils for climbing, as in peas, or into Spanish. For defense, as in cactia, figure 5.10 AB. Figure 5.10 AB. Figure 5.10 AB. The fleshy leaves of onion and garlic store food. In some plants, such as Australia, Acacia,
The leaves are small and short-lived. The petioles in these plants expand, become green, and synthesis food. Leaves of certain insectivorous plants such as pitcher plants, Venus fly trap are also modified leaves. Figure 10.C. Figure 10.A 10.A में देख सकते हैं modification of leaf for support tendril protection fines. ये जो है इसे कहते हैं सपोर्ट टेंड्रल. ये जो ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन किया गया है, मतलब ऐसा स्नेक की तरह है, इसे कहते हैं लीफ टेंड्रल. बी नंबर है जो केले का जो पत्ता है उसे कहते हैं प्रोटेक्शन फाइन्स लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. ये जो ऐसा जो मिडिल का जो ऐसा पार्ट है जो यहाँ पर, इसे कहते हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. इसे कहते हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. The inflorescences. A flower is a modified short wherein the short apical meristem changes to floral meristem. Internodes do not elongate and the axis get condensed. The apex produce different kinds of flora appendages laterally at successive nodes instead of leaves. When a short tips transforms into a flower, it is always solitarily. The arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescences, depending on whether the apex gets converted into a flower or continues to grow. इसे अंडरलाइन कर देते हैं. Two major types of inflorescences are defined: racemose and cymose. In racemose types of inflorescences, the main axis continues to grow. Main axis होता है continues to grow होता है. The flowers are borne laterally in an arcopetal. इसे कहते हैं arcopetal succession. Figure 5.11. 5.11. Racemose inflorescences. इसे कहते हैं racemose inflorescences. In cymose type of inflorescences, the main axis terminates into a flower. Hence is limited in growth. The flowers are
born in a precipitated waters. Figure 5.12.